This is for photosynthesis. What is photosynthesis? Radiant energy does some light work. This is photosynthesis. All around us, animals are taking food out of the world with every breath. They move carbon from organic glucose to inorganic carbon dioxide. आप सबको पता है photosynthesis का equation. Okay. Now see students, this whole chapter and many more chapter in this slides, they are written by Larry Gonick, David Wessner, two biologists. इन दोनों ने लिखा है ये आप लोगों को बताने के लिए. तो इसमें क्लास 7th के स्टूडेंट से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है. सो नो नीड टू वरी, यू जस्ट हैव अ लुक. Unless something somehow pushes inorganic carbon back into organic molecules, food would run out. That, reader, is what green plants do. They take carbon dioxide from the atmosphere and make it organic. Plant eat air. It means this कि plant क्या खाते हैं? They eat air. Now the next slide. This is the black and white picture. See, this is rhinoceros eating grass. उसके ऊपर ढेर सारे क्रोज बैठे हुए हैं. ओके. राइनोसोरस के ऊपर जितने भी लाइसेस हैं, उसके ऊपर जितने भी कीड़े हैं, वो सारे क्रोज खा रहे हैं. क्रोज का भी पेट भर रहा है और राइनोसोरस भी कभी पीठ की सफाई हो रही है. सो दिस इज सिम्बायोसिस एसोसिएशन, जिसमें दोनों एनिमल्स को फायदा हो. क्रोज को अपना पेट भरने को मिल रहा है और राइनोसोरस की सफाई चल रही है. दिस इज द पिक्चर. नाउ this trick is called carbon fixing. Lose carbon as airborne carbon dioxide. Carbon fixing आपने क्लास 8 में पढ़ा है. Airborne carbon dioxide enter plant cell, which fix it to an organic molecules. By doing so, plants make food both for themselves and for everybody else. So this is the rhinoceros. Thanks from the bottom of my heart and other organs. Kyunki he is eating the plants. The plant, they prepare their food with the process of photosynthesis. See here, chatting is not open. So I'll discuss these topics in later. So now the reaction joins carbon dioxide and water to a doubly phosphorylated 5-carbon sugar. So this is of 11th class topic. Okay? So now this is whole process, how water and carbon dioxide helps to make a carbon chain. ये कैसे बनता है? The reaction joins carbon dioxide and water to a doubly phosphorylated 5-carbon. ठीक है? So here phosphorus, as you know in chemistry, phosphorus symbol is P, is joined by 5 carbon. So these two are the phosphorus. See, these two are the phosphorus here and these two phosphorus molecules are here. ठीक है? Bicarbon sugar, RUBP. The full form of RUBP is ribulose 1,5-biphosphate. आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में चेन रिएक्शन, तो चेन रिएक्शन में ये जो 1,5-बाइफॉस्फेट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि फॉस्फोरस के 2 ग्रुप जड़े लगे हुए हैं, PO4,
और ये फर्स्ट और फिफ्थ नंबर पे लगा हुआ है. दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. फिफ्थ में लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोला गया है 1,2 बाइफॉस्फेट. राइबुलोज 1,2 बाइफॉस्फेट. तो ये आपको दिख रहा है. which then splits into two phosphorylated 3 carbon chain, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से रिएक्शन होता है और इसमें कन्वर्ट होता है. ठीक, ये ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है, ये क्लास 11th का प्रोसेस है. और ये आप अभी इसीलिए देख रहे हो कि ग्लूकोज डायरेक्टली तुमने 7th 8th में पढ़ा है फॉर्मूला फोटोसिंथेसिस का, बट इन बिटवीन दैट दीज प्रोसेस आर मूव्स ऑन. तो ये हायर सेक्शन में है. So same this formula gets split into two with the help of carbon dioxide and water. तो ये आपको split हो गया into two. Stable करने के लिए these here are the 3 carbon atoms. Naturally, an enzyme enables the reaction. A gigantic protein called ribosco. तो ये आपको पता है जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे एंजाइम्स पे डिपेंड करते हैं. एंजाइम्स रिएक्शन को स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं. तो वो एंजाइम जो यूज होता है दैट इज रिबिस्को. मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 5 lakh and the most abundant and the important protein on earth. So this is a structure, rough structure एक बना दिया गया है जिसमें eyes है, lips है, ears है. I have a carbon fixation. See. Now another picture. Here are this whole carbon fixation gets split into two. An enzyme ribosco is dead slow, catalyzing a mere 3 reactions per second. Most enzymes do hundreds or more in that time. So ribosco is a very slow enzyme. Its process is in each second it reacts into 3. ठीक है, 3 catalyzing वो निकालता है और दूसरे enzymes 100 catalyzing निकालते हैं. It is also error prone, occasionally putting oxygen where carbon dioxide is supposed to go. So here is the second कि जहां पर carbon dioxide is less, so where there is entering of oxygen, other enzyme steps into it to repair the bad output. तो दूसरे enzymes ऑक्सीजन के साथ इसमें घुसते हैं जिससे कि इसका जो कैटेलाइजिंग प्रोसेस है वो स्मूथ से थोड़ा ज्यादा स्मूथ हो सके. डिस्पाइट, नाउ सी, दूसरे एंजाइम्स जब इसमें घुस गए तो जो इनका कैटेलाइजिंग प्रोसेस यहाँ स्लो था, यहाँ एंजाइम्स घुसे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो उनका रिएक्शन ये मल्टीपल हुआ. डिस्पाइट और बिकॉज ऑफ दिस इनएफिशिएंसी, plants make load of ribosco enough to draw tens of billion of tons of carbon out of the atmosphere. तो ribosco जो कि स्लो एंजाइम था उसने अब कितना निकाला, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर एवरी डे वर्ल्ड वाइड. ऑलवेज रेडी फॉर अ जॉब डन बैडली. Even so, ribosco is not enough for proper metabolism. Plant needs to reduce ribosco phosphoglycerate output as well as to continually make more substrate. अब एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा तो प्लांट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. और हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीज को काटते जा रहे हैं घर बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए. तो उस कंडीशन में क्या होगा, as well as to continually make up substrate. RUBP, ribosco, is merely a critical intermediary. See, this is the structure of glucose. कैसे ग्लूकोज बनता है ये सब तुमको पता है, तुमने देखा हुआ है कि, बट ये जो ग्लूकोज आपको मिल रहा है, दिस फ्रूट इज नॉट अ इजी गोइंग प्रोसेस. उसके पहले उसको इतने सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो आपने लास्ट स्लाइड्स में देखा है. Ultimately, in fact, the plant makes glucose from carbon dioxide and water. So this is the reaction. Now this scientist is explaining the reaction, how water helps and splits to make a glucose.
आपने केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा होगा. सो हियर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. You can read this. That's a really hard reaction. Oxygen desperately wants to be with hydrogen and it takes a lot of energy to break them apart. And that is the reaction is endergonic, energy absorbing. It has to be, it's the reverse of exgonic glucose oxidation. And yet plants somehow pull it off. They do it in the only way possible by coupling the reaction to another highly exergonic reaction, usually a hydrogen bomb. अब आपको पता है हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं. ठीक, इन सबको बनाने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो चेन होता है, उस चेन की वजह से ब्लास्टिंग होती है. सिर्फ बारूद भर देने से नहीं होता. आप लोग सोचते होंगे ना कुछ एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव डल जाता है, तो ऐसा नहीं होता. I mean the never-ending thermonuclear explosion in the sky, our sun. A glow lamp also works. Photons, we are getting light energy from sunlight. The synthesis of glucose runs on photons, energetic particles of light, which give the process is photosynthesis. Plant cells have special machinery for capturing solar energy. You know which part of the cell? Mitochondria, powerhouse of the cell. And see this chloroplast, green pigments. Thylakoids आपने पढ़ा हुआ है. Chloroplast in a plant cell, membrane-bound chloroplast contains stacks of green launch-shaped bodies called thylakoid. ये ऐसे लंबे-लंबे thylakoids होते हैं जो green होते हैं, chloroplast के अंदर present होते हैं. And the cell membrane, cell wall. Each thylakoids bristles with photoreceptors. इनका काम होता है ये grab करके रखते हैं light को, इसलिए ये chlorophyll के अंदर present होते हैं. The light grabbing molecules of chlorophyll. See, this is the huge structure. It is difficult to remember, but it should be remembered if you will do in a proper way. Chlorophyll is skill shaped, its handle sticking into the thylakoid while its pan catches photons. A magnesium atom sits at the pan center. Plant chlorophyll comes in two variants, A and B, which barely differ as highlighted. अब देखो आपको सारे जो ट्रीज हैं वो ग्रीन क्यों दिखते हैं? सो दिस इज द लॉजिक बिटवीन देम. सी द सनलाइट इज, एज वी नो, इट इज ऑफ वाइट कलर. ठीक है, दे एब्जॉर्ब ऑल कलर्स बट ग्रीन लाइट बाउंसेस ऑफ. वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बट द ग्रीन लाइट बाउंसेस ऑफ, meets your eye and gives the plant their color. So this is the main logic. ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुमको जानने लायक है, इसलिए जो समझ में आ रहा है उसको कीप इट इन माइंड एंड लॉक इट. This is the photosynthesis. Photosynthesis begins when incoming photon join या jolt one of chlorophyll electrons free. एक अगर फोटोन आता है तो उधर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है. This high energy electron will be put to good use.
But for now, let's focus on the chlorophyll ion. Chlorophyll craves a new electron so intentionally that it can outbid the champion electron hug itself. Oxygen, chlorophyll oxidizes, takes an electron free from water, no mean feat a proton also leaves. So this is the structure of water, how structure of water helps in chlorophyll. This is the structure of water, H2 and O. One electron skip. So repeated 4 times, the reaction makes one oxygen molecule. This is the 4 chlorophyll plus 4 chlorophyll. So as you know, what is the valency of oxygen? Now see, for the 4 formation of hydrogen, then it skips to the oxygen. अब वो जो oxygen बनता है, then it enters into the air. This is the process which we are taking. The first step, this is the main point to remember. The first step of photosynthesis reverses the last step of respiration, which puts water together. Overall photosynthesis resembles respiration run backward. So it is a reverse process of respiration. Photosynthesis is a reverse process of respiration. तो आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला है. Keep it in mind. Now see. Now back to the electron that jumped off chlorophyll, जो निकल गया था. As in respiration, these high energy particles drive pump that move H plus ions across a membrane here into the thylakoid. Thylakoid जो आपने chlorophyll के अंदर देखा था. The H plus in turn slows out through ATP synthesis. ATP is adenine triphosphate synthase is a enzyme making ATP. So this is the enzyme which helps to flow out the hydrogen and forms ATP, adenine triphosphate. One difference, electron rather than falling to oxygen land on a chlorophyll ion. There they absorb another photon jolt and jump off again. See. हर बार में एक हाइड्रोजन आके इसमें ऐड होता है. So अब वो पूरा जो सीक्वेंस है थैलाकोइड का उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. Now he is saying, hey, gives it a rest. See, this is ADP. ADP is diphosphate. तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो बन जाता है एडिनोइन ट्राइफॉस्फेट. These photon-driven elements splitting water, making ATP and reducing NADP plus are called the light reactions. आपने light reactions पढ़ा होगा, dark reactions पढ़ा होगा, और अगर अभी नहीं पढ़ा है तो सीधे आप class 11th में पढ़ेंगे light reactions and dark reactions. This class 11th course, this is the Calvin cycle. ये आपका class 11th का course है. You just read it. अगर नहीं समझ में आता है, leave it, read it. The Calvin cycle powered by ATP fixes carbon to RUBP, reduces the product to sugar and builds more RUBP to start the process again. Counting carbons, you can see that 3 CO2 and 3 RUBP, 18 carbons generate just 1 3 carbon sugar molecules plus RUBP. So you know rubisco biphosphate is this.
This is a long cycle which you will study in class 11. So I am removing this slide. This is again, this Calvin cycle turns into gap, that is glyceraldehyde phosphate. As I told you, in this story, you will see the syllabus of class 7 to class 11. I am not able to remove these topics because these are in between the class, in between the slides. Now see, this is all fruits which we are getting from plants. 2-gap glyceraldehyde phosphate, 2-gap, 2-glyceraldehyde phosphate can join to make glucose, and glucose can chain into polymers. So many glucose make a polyglucose. So that is the chain of polymers. So glucose builds a tough cell walls that let plant form stem, stalk, wood. तो जो हमें प्लांट से ग्लूकोज मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, तो ये सब कुछ एक स्टॉक, एक थिक स्टॉक बनाता है सेल वॉल पे. तो जो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है उस प्लांट को मजबूत करने में. ठीक है. Ciliary are instance is mostly cellulose and water. तुमको ये भी पता होगा कि जो तुम्हारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर से फ्रूट्स मिलता है, दे आर विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वी आर गेटिंग द ग्लूकोज. ग्लूकोज के अंदर स्टार्च भी प्रेजेंट होता है. आपको ये स्टार्च किसमें मिलेगा? आपने कभी देखा होगा स्टार्च का अगर टेस्ट करना है आपको, तो आपको राइस में स्टार्च मिलेगा. जब मम्मी घर में चावल बनाती है उसमें स्टार्च मिलेगा. आपको पोटैटोज में स्टार्च मिलेगा. आपको स्वीट पोटैटो में स्टार्च मिलेगा. आप कुछ चीजों को जैसे स्टार्च आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल दो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है. ठीक है. See, plants also metabolize gaps into fats stored in seed to nourish their sprouts. Unpolymerized glucose and other sugars sweeten fruit. Sweetness attracts feeders that spread the plant seeds. Pollination पढ़ा है तुमने? Pollination में क्या होता है? जो अब fruits हुए, fruits को किसने खा लिया? मान लो किसी bird ने खा लिया, या जो flowers हुए, flowers का nectar किसी ने खा लिया. तो जो इस तरह का होता है उसपे pollination process होता है, मतलब dispersal of seeds through wind, through water, through seeds. In some plants, fix far more carbon than they need for fuel in the movement. This implies that more carbon dioxide comes out of the air during photosynthesis than goes back during respiration. And more oxygen goes into the air than comes out. तो ये तभी हो सकता है मोर कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके पास ट्रीज कम हो, और मोर ऑक्सीजन इनटू द एयर ये तब हो सकता है जब आपके पास ट्रीज बहुत ज्यादा हो. टू डिफरेंट कंडीशंस. सी दिस इज द पिक्चर. इसमें आपको स्मॉल एनिमल्स से ह्यूज एनिमल्स तक मिल रहे हैं कि वो किस तरह से प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं, और प्लांट्स हमें दूसरों के फूड के अलावा हमारे लिए वो क्या क्या प्रोसेस करता है. The net effect, plants take carbon dioxide out of the atmosphere and put O2 into it. Plants also put new energy-rich organic matter into the world. This is very good news for animals. Plants replenish the food and oxygen depleted by animals eating and breathing. अगर आप प्लांट को नहीं काटोगे तो प्लांट्स क्या करते हैं? खुद ही अपने आप को अपने को रिपेयर कर लेते हैं. यही अगर आपको कहीं कुछ लग जाती है चोट, या किसी एनिमल को लग जाती है, तो आप उसको वेटरनरी के पास लेके जाते हो, आपके पेरेंट्स आपको दवाई लगाते हैं. लेकिन अगर वही प्लांट को कुछ हो जाता है तो प्लांट खुद से उसको रिपेयर कर लेते हैं.
प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स आप उसको बोल सकते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन डिसॉल्विंग द एनिमल्स. जो एनिमल्स, प्लांट्स क्या होता है, अपने अंदर से एक ऐसे एसिड्स निकालते हैं कि कोई एनिमल अगर जंगलों में मर जाते हैं तो उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उनको खा लेते हैं, बट उनके जो पूरे और जो बचे हुए पार्ट्स रहते हैं वो उस एसिड से डिसॉल्व होके सारा कुछ डिकम्पोज हो जाता है जमीन के अंदर, एक्सेप्ट स्केलेटन. तो आपको एनिमल का स्केलेटन मिलेगा क्योंकि स्केलेटन कोई डिकम्पोज नहीं कर पाता है, बट यू विल नॉट गेट द any pieces of animal because of that acid which is present in the plants. And the it is not an acid, it is a chemical, and the microorganisms which are present in the soil. Plants and all other organisms that build and fuel themselves from inorganic matter are called producers, or more technically autotrophs. Self-fuelers, producers make biology possible. Besides plants, other producers include cyanobacteria, photosynthetic microorganisms colored blue-green by their chlorophyll. See, this is the consumers. We all are the consumers. Can I please get executive product credit? See, he is asking, but he will not give anything in return to the plant, but he is asking for the food. Or heterotrophs, other fuel are all the organisms that eat only organic food, animals, mushroom, and most bacteria and heterotrophs. Producing is undergoing, so every producer must absorb outside energy nearly always from the sun. This means that almost all life ultimately depends on the sun for energy. Consumers eat producers. You are all take from where it is. This is the sun. He is asking all things, whatever you say. Finally, we should note that a few producers can live off alternative energy source other than sunlight. Totally in the dark and alive, it's very difficult. पूरे टाइम अगर अंधेरा रहेगा और आपको सरवाइव करने को बोला जाए तो it is very difficult for we people. Some live deep in the ocean where oozing molten rocks creates hellish surrounding of sulfurous gas and superheated water. Various strange prokaryotes there can harness this heat rather than sunlight for making fuel. And these all microorganisms, they need a darkness so that they can multiply. सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म डार्कनेस में ही मल्टीप्लाई कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए ये हेवन है. उनके लिए तो बहुत खुश है कि चलो स्वर्ग में आ गए, बट वी आर नॉट एबल टू लिव इन डार्क. But whatever the energy comes from, the principle is that autotrophs make and heterotrophs take. Take anything you want, just don't take us for granted. This is the microorganism. So here you have a small chapter, as I told you. So any question? I am waiting. If you want to raise your hand, you can ask. Any questions, students? Students? अच्छा,
Any question? Anyone? Bhavya said no. और किसी को? For today's only, you have this much. We will do revision in next period, in next class. Okay.